Right ahead of the upcoming Uttar Pradesh by-polls, BJP has launched its membership drive. The UP BJP minority wing, which has initiated this campaign from a dargah in Lucknow, according to them, they aim to enroll at least 5 lakh new members. Listen in exactly what this initiative is all about. The aim is to make the party more powerful, to increase its strength. And so far, I managed to convince 174 people, and they have joined the party. And the best part, what I have seen, that I don't have to work very hard, giving them the details of the party's functioning, the benefits the party has given. The moment I spoke to them, just in 2-3 seconds, they said yes. So the response is very good, and I don't think there'll be any difficulty to achieve the target of 5 lakhs. इसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा लखनऊ से जो हमारे धर्म के अगुवा हैं, चाहे वो दरगाह के लोग हैं, खानकाहों के लोग हैं, उनके सज्जादा नशी हैं, या मौलाना हैं, या लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी हैं, 3 तलाकशुदा महिलाएं हैं, ये सब वो लोग हैं जो समाज को प्रभावित करते हैं। और मोदी जी की सदस्यता लेने के बाद हम सब लोगों ने 5 लाख मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा है। So the BJP's membership drive that has swiftly become a focal point of controversy for the opposition, with the Congress party criticizing the BJP, claiming that the party won't be able to add even 500 more members. Meanwhile, when we talk about the Samajwadi Party that has linked the BJP's membership drive campaign to the Waqf bill, let's listen in how the opposition has been reacting. देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 लाख तो बहुत दूर है, 500 मुसलमान भी पूरे देश में नहीं जोड़ सकती है। अमूमन ऐसी खबरें आती हैं कि मुसलमान के नाम पे कुछ लोगों को ये लेके आते हैं, औरतों को खास तौर से नकाब पहना के लाते हैं, और दूसरे दिन अखबार में छपता है। ये लखनऊ में ही ऐसा हुआ है कि वो कोई और लोग थे और उनको कुछ लालच दे करके लाया गया था। भारतीय जनता पार्टी से कोई मुसलमान नहीं जुड़ने जा रहा। दूसरी बात की, भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में इस तरह की कोशिश करती रही है। ये उसका 3रा या 4था अटेम्प्ट है। इससे पहले भी उसने दरगाहों में जाने की कोशिश की थी, जो ओबीसी मुसलमान यानी जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके बीच भी जाने की कोशिश की थी। तो कोई भी इनसे जुड़ नहीं रहा है। देखिए, चाहे बेनिफिशरीज हों या मुस्लिम्स की बात हो, सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस घोर मुस्लिम विरोधी संगठन है। आप दरगाहों पे जा रहे हैं मिलने के लिए, वक्फ बोर्ड के जरिए सभी दरगाहें, जो वक्फ अमेंडमेंट आ रहा है, सब दरगाहें जाने वाली हैं, उनकी ज़मीनें सरकार के द्वारा कब्जा हो जाएंगी। तो आप जिस दरगाह के खिलाफ हैं, आप जिस मकबरे के खिलाफ हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, मस्जिदों के खिलाफ हैं, मुसलमानों को जोड़ के आप क्या करना चाहते हैं? सीधी सी बात है कि सरकार दिन ब दिन जो अपना इकबाल है वो खो रही है। Adib is joining us live right now. Adib, good morning. Is this push, as far as the BJP is concerned, to conduct this membership drive just for the minorities, keeping in the backdrop as far as the BJP's performance has been in the recently held Lok Sabha elections? Well, definitely, Amita, see, the by-poll is round the corner in the state of Uttar Pradesh. This is a crucial by-poll for the Bharatiya Janata Party. And now they are planning that if the Muslims, which are the main vote bank of Samajwadi Party and the Congress Party, if they are coming into the BJP, then it will be very good for the Bharatiya Janata Party. And for this, the minority wing of the Bharatiya Janata Party has been given a task to add 5 lakh new members of the minority community, especially the Muslim community. And for this, the BJP's minority wing has kick-started a drive from Lucknow at a dargah, and they have inducted the minority section to the BJP with a help of the toll-free number that has been issued by the Bharatiya Janata Party. Now, the BJP aims that their focus will be on the 10 by-poll seats, and they will be adding 5 lakh members of the minority community to the Bharatiya Janata Party. The opposition is quick to react. The opposition is reacting, and the Samajwadi Party is saying that the BJP is trying to add minorities, but they will also snatch the property through the work bill. While the Congress is saying that forget 5 lakhs, but BJP won't be able to add 500 people, as the minorities community knows very well
how the BJP works, Amita. All right. When it comes to this Sadasyata Abhiyan that has been taking place, the opposition, Adib, has been linking it when it comes to the Waqf bill. Of course, this is something that has drawn a lot of contention. But how is that the opposition is focusing, saying that the minority is someone that will never get in touch or be aligned with the BJP? Let's